Hello students, today we are going to start with standard deviation. We also call standard deviation as root mean square deviation. What is the formula for standard deviation, for computing of standard deviation? See, the basic formula is standard deviation is equal to under root summation x minus mean square divided by n, or you also write this as a summation small x square divided by n. Small x is equal to x minus mean, and this sign is of standard deviation. Standard deviation is equal to this. Okay, and coefficient of standard deviation is equal to standard deviation divided by mean. Okay, then first method to calculate the standard deviation is actual mean method. Actual mean, in case of individual series, the formula for actual mean method is this. Okay, standard deviation equal to summation x minus mean divided by n का whole square under. Let's start with one example. This is your x series. X series 16, 20, 18, 19, 20, 20, 28, 17, 22, 20. Okay. So now first we have to calculate the mean. What is the formula for mean? Summation x divided by n. So we have to total of these number. This is 200, and n is 10. Okay, so your mean will be 200 divided by 10 is 20. Okay, so let's now we have to calculate small x. Formula for calculating small x is x minus mean. Mean is 20. Now 16 minus 20 minus 4, 0 minus 2 minus 1, 0, 0, 8 minus 3, 2 and 0. Okay, now for calculation we required x square. X square minus 4 into minus 4 and 16, 0, 4, 1, 0, 0, 64, 9, 4, 0. The summation of x square is equal to 98. Now we put these values in the formula. Formula for calculating standard deviation is equal to summation x square divided by n equal to summation x square is 98 n 10 in the under root 0.8
equal to 3.13. This is your standard deviation. Now the second method. Second method is assumed mean method. So what is the formula for this? Standard deviation is equal to summation d square divided by n minus summation d divided by n square. Here d is x minus a. Okay, so now this is our question. This is x series and we assume assumed mean method. assumed mean method में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को एज्यूम करते हैं. ओके, तो हमने एज्यूम क्या किया, और मोस्टली अगर आपको सही आंसर निकालना है तो हम पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उससे भी आपको नियर बाय वैल्यू का पता चल जाएगा कि आपको क्या एज्यूम करना चाहिए. तो एज्यूम किया हमने यहाँ 20. ओके, दिस इज योर एज्यूम्ड वैल्यू. नाउ वी कैलकुलेट डी x माइनस ए, यानी आपको ये सभी वैल्यूज़ 20 में से माइनस करनी है, जिससे हमारी -13, -10, -8, -7, -5, 0, 1, 8, 9, 15 वैल्यूज़ आ गई हैं. तो आपका समेशन डी आ गया है -10. ओके, नाउ डी स्क्वेयर. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमने एक्चुअल मीन में एक्स स्क्वेयर कैलकुलेट किया था, यहाँ हमें डी स्क्वेयर की रिक्वायरमेंट है. तो डी स्क्वेयर के लिए हमें क्या करना है, 13, 10 इन सब का स्क्वेयर कर देंगे सिंपली. तो 169, 100, 64, 49, 25, 0, 1, 64, 81, 5. Okay, so summation d square is equal to 778. Now come to the formula. Summation d square n minus summation d n का होल स्क्वायर इक्वल टू 778 डिवाइड बाई n. समेशन डी स्क्वेयर आपका क्या है, 778. n है आपके पास 10 माइनस समेशन d है आपके पास -10. तो यहाँ पे हम -10 लिखेंगे एंड अगेन 10 स्क्वेयर. ओके, अब हम अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी लाइक दिस एंड 8.76 is your standard deviation for this question. Okay, we will do next method in next video. Thank you.